हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स वर्ल्ड। कॉम्पिटिटर्स वर्ल्ड को आपण मानक स्वागत। इन टुडे सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट खारावेला, द किंग ऑफ महामेघवाहन डायनेस्टी। ओके, सो आज आम खारावेला विषय रे पढ़िबा। दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट सेशन एंड आफ्टर द थ्योरी पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग द एमसीक्यूज। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन। सो आम डिटेल रे आगे थ्योरी टाको भलसे बुझंतु, तापर आम MCQ डिस्कशन करवा जोटा कि आप इजिली आंसर दे पारे। एनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, यू कैन आंसर इजिली। ओके, सो लुक एट द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाथीगुम्फा। ओके, वेयर इट इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन उदयगिरी। उदयगिरी, ओके, उदयगिरी भुवनेश्वर एटा अछि, दैट इज हाथीगुम्फा। ओके, सो जदि आम खारावेला विषय रे कहबा, सो खारावेला विषय रे जेकोसी डिटेल्स आम केवल इनस्क्रिप्शन पाई था। ओके, तो इनस्क्रिप्शंस ऑफ खारावेला आर द मेन सोर्सेस। वेयर दिस सोर्सेस इनस्क्रिप्शंस आर सीन? यस, दैट इज सीन इन द हाथीगुम्फा केव इन उदयगिरी हिल्स, and this inscription by Kharavala is the main source of information about him. Okay, and this cave is known as Hatigumpha cave. Okay, so look at this. See here, this is Hatigumpha. Okay, so ei Hatigumpha रे ही खारावाला निजर इनस्क्रिप्शन बा पत्थर खोदित इनफॉरमेशन से तांका विषय रे देइछंती। ओके, देखंतु, this is the picture of a Hatigumpha. Okay, look at this. बर्तमान मु आपन को देखेबी खारावाला इनस्क्रिप्शन केमती हाथीगुम्फा रे खोदित होइतला, तापर हम डिटेल्स पढिबा। Look at this. This is the inscription made by Kharavala. Look, here is the inscription made by Kharavala. Okay, so if we'll talk about the inscription was about 17 lines. केतेटा लाइन रे inscription थिला? That is 17टा लाइन रे inscription थिला। टिके रुहंतु। Yes, look at this. The inscription of Kharavala was 17 lines. Okay, 17 lines inscription. Okay, and these inscriptions were not clearly visible. देखो, look at this. This inscription was not clearly visible and also not understandable. यह को मैंने clearly देखा जाउ नथिला, कि बुझिबा भी कष्टसाध्य थिला। Then who decoded this? Yes, Andrew Sterling. तांका ना होची Andrew Sterling. Andrew Sterling, when? In the year that is 1820 AD. So he was the person who first decoded the Hatigumpha inscription. Okay, and in which language these inscriptions were made? Yes, it was written in, that is, Brahmi script and that is Prakrit. ब्राह्मी एंड प्राकृत स्क्रिप्ट रे ए जो इनस्क्रिप्शन गुड़ाक मेड थिला। जदि आम खारावेला विषय रे कहबी, खारावेला रूल्ड बिफोर अबाउट 2000 इयर्स इन ओडिशा। 2000 वर्ष पूर्वे से ओडिशा रे शासन करते, बिफोर 2000 इयर्स। ओके, जदि आम आज देखा, सो इन व्हिच क्लान ही बिलोंग टू? ही बिलोंग टू चेदी क्लान। चेदी clan. Okay, and the life and achievement of Kharavala is found in this Hatigumpha inscription. Okay, and 13 other inscriptions were also seen, that is in Khandagiri and Udayagiri hills. Other 13 inscriptions, okay, it was found in Khandagiri and Udayagiri hills. Okay, so if I will talk about these inscriptions, then who decoded it? Yes, name was Markrem Kito. Markrem Kito, M-A-R-K-H, Markrem Kito. Markrem Kito, in the year that is 1937, decoded the inscriptions made in Khandagiri and Udayagiri hills. Okay, जदि मैं खारावेला विषय रे कहबी, खारावेला occupied the throne at the age of 24. Okay, 24 वर्ष बयस से शासन रे
शासन भार ग्रहण करथिले एंड ही रूल्ड फॉर अबाउट दैट इज 13 इयर्स ओके मु फर्स्ट ब्रीफली सब कहि दोछि खारबेला विषय तापर हम डिटेल ताको देखिबा ओके so Kharavala occupied the throne that is in about 193 BCE to 170 BCE okay 193 BCE to 170 BCE okay खाराबेला को आमे कहि थाओ दैट इज तांको कहा जाए महामेघबाहन ऐर खाराबेला Mahameghabahana Aira Kharabela and he was the greatest emperor of Mahameghabahana dynasty. Later Kharabela that was the supporter of Jainism. Okay, he adopted that Jaina dharma, Jainism. Okay, so look at this. Kharavala ruled during the 2nd century BC and in the session we will be discussing how he defeated Magadha, how Kharavala defeated Magadha and how he adopted the Jaina religion. Okay, so ame padhiba se bisare. Look at this. So these are the regions that were occupied by the Mahameghabahana dynasty during Kharavala. Okay, so in the previous session we discussed about the Kalinga war and this was the bloodiest war in the history. Many people, about lakhs of people died in this war and many were made captive, many died due to starvation. Okay, so this was the Kalinga people of Kalinga were very much agitated. Although Ashoka adopted Buddhism and he became a benevolent ruler after that, but many peoples many people lost their children, many families were destroyed, many families were devastated. Okay, so after the downfall of Maurya dynasty, Maurya dynasty the Mahameghabahana dynasty occupied the Magadha. Okay, so ame ebe details पढ़िबा खाराबेला विषय. What we will cover in this session, first thing is that about Hatigumpha inscription, okay, from which the detailed sources of Kharavala we came to know. Then yearly career of Kharabela, the achievements of Kharabela from 1st to 13 regnal years and we will estimate that. Okay, so look at this. This is the introduction. So after the Kalinga war, Odisha's history becomes unclear. Okay, कौन हेतला कौन नहीं, that was not clear. A significant source of information about his period comes from that is Hatigumpha inscription. I have already told you where it is found. It is found in the Udayagiri in Bhubaneswar. The inscription talks about Kharabela and he was a powerful king who defeated rival kingdom that is Magadha and expanded Kalinga's territory. Kalinga prospered greatly under his rule. The Hatigumpha inscription details are supported by excavations at Sisupalgarh near Bhubaneswar, and where this Sisupalgarh situated, it is situated in near Bhubaneswar. Okay, in the caves at Udayagiri. Kharavala's time is considered the golden period in the ancient Odisha history, marked by the prosperity and pride of Kalinga. Okay, so this is all about Kharavala. So jiba bartaman Hatigumpha inscription dekhiba. Look at this. This is Hatigumpha inscription. I have already shown you the pictures. The Hatigumpha inscription was discovered by 1820 by A. Sterling. मु कहि सरछि को स्क्रिप्ट लिखा हैतला. It was written in Brahmi script and Prakrit language. Yes, and some portion of the inscriptions are damaged. वर्तमान से जो लिखा हैतला ब्राह्मी और प्राकृत के वर्तमान किछि पोर्शन तार कोन हैछि ना डैमेज्ड hi हैछि, which led to different interpretations of the fact. In 1964, N.K. Sahu gave an interpretation of the inscription in his book that is Utkal University History of Odisha Volume 1. Professor K.C. Panigrahi also analyzed the inscription in his critical views. Okay, the inscriptions provide a detailed account of the career and achievements of Kharavala in chronological sequence. वर्तमान हमें देखिबा से विषय. It is the only inscription in India that describes so vividly and consistently the career and achievement of a ruler. Okay,
Some of the key achievements of Kharavala mentioned in the inscription. कौन कौन थिला key achievements? He conquered many kingdoms. से बहुत राज्य जय करथिले. क्यों राज्य? मगध, कलिंग, कोशल. Okay. He defeated the army of सातवाहन king गौतमीपुत्र, that is सातकर्णी. This is very important. Question एथुर आसीबो. से कहा को हरैथिले? सातवाहन king, that is गौतमीपुत्र सातकर्णी. He performed many religious and charitable acts, but he built many temples and other public works. Okay. बर्तमान आम जा इयरली कैरियर ऑफ खाराबल कौन थिला? खाराबल एंड द चेदी डायनास्टी. खाराबल बिलोंग्ड टू द चेदी डायनास्टी. खाराबल वाज द थर्ड रूलर ऑफ द चेदी डायनास्टी. जदि पचार केते नंबर रूलर थिले? दैट इज थर्ड रूलर. ओके, 3 नंबर रूलर थिले चेदी डायनास्टी रो. द कंट्री ऑफ चेदीस रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मॉडर्न बुंदेलखंड. Its capital was, that is, look at this, his capital of Chedi dynasty was, that is, Shothi Bhatnagara. Okay, which is probably incidental with Suktimati of Mahabharata. The founder of this dynasty was Mahameghabahana. Okay, founder kiye thile Chedi dynasty ro? He was Mahameghabahana. Okay, and descendant of ancient Chedi monarch Vishnu, identified with Basu Upparichara of the Mahabharata. So this is related to Mahabharata. He was the grandfather of Kharavala. Who? That is Mahameghabahana. Because Kharavala was the third king. 3 number king thile Mahameghabahana dynasty. Kharavala's father is not mentioned in the Hatigumpha inscription. Kharavalankar बापा किए थिले से विषय हाथीगुम्फा रे किछि मेंशन करा जाई नाही. Kharavala's early life कौन थिला तांगे early? The first 14 years of Kharavala life was spent in games, battling, befitting a young prince. So he was a young prince the first 14 years. मु कहि सारछि खाराबेल 14 वर्ष बयस रे राज्यभार ग्रहण करथिले. ता पूर्वरु से he was the prince. Okay, befitting young prince. He received proper education in literature, coinage, mathematics, law and administration. तांको ए सब सब्जेक्ट रे एजुकेशन दिया प्रोवाइड कराइतला. He ruled as crown prince for 9 years. 9 वर्ष पई से crown prince भाबे रहितले. At the completion of his 24th year, he crowned महाराजा of कलिंग. 24 वर्ष पूर्ण परे से कोन हेले ना कलिंगर महाराजा तांको डिक्लेयर करागला. खारावालस रेन, खारावालंकर शासन विषय में टिके पढिबा. तापरे रेग्नाल ईयर. रेग्नाल मीन्स in the year when the king or queen are in power, that is called regnal year. बर्तमान देखिए खारावालंका रेन कोन थिला. Kharavala was a great conqueror and expanded the boundaries of his kingdom. He defeated the armies of Satavahana and the Andhras and the Magadhas. He was also the great patron and of art and culture. He built many temples and other public works. Okay. जिबा अचीवमेंट्स कौन थिला खारावल को? वेरी वेरी इंपोर्टेंट. एटू आमे स्टार्ट करिवा. लुक एट दिस. तो फर्स्ट रेग्नाल ईयर बर्तमान खारावल का. रेग्नाल मीन्स कौन? रेग्नाल मीन्स होची द ईयर इन व्हिच द किंग और क्वीन आर इन पावर. जो ईयर से माने पावर रे थांते ताको कहवा जाय रेग्नाल ईयर. सो खारावलस फर्स्ट ईयर ऑफ रेन वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट एक्शंस. कौन थिला देखिबा. ही रिपेयर्ड कलिंग नगरी गेट. इंपोर्टेंट मन रखंतु. rampants and structure damaged by cyclone. साइक्लोन रे सेतेबेले कलिंगर बहुत पार्ट डैमेज हो जाता. सो फर्स्ट रेग्नाल ईयर से कौन कले ना कलिंग नगरी गेट को रिपेयर कले. आउ जो गुड़ाक डैमेज होता से कंस्ट्रक्ट कले. ओके, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट्स फॉर क्लियर वाटर पूल्स, फिक्स्ड डैमेज्ड गार्डन्स एंड पार्क को से मरामती कले. सो एक्सपेंडिचर केते थिला ना पाखापाखी दैट इज 35 लाख कॉइन्स. ओके, he corroborated Shishupala God excavations, defensive ramparts, gateways, high towers were found. His actions made his people glad and cheerful. So this was a great year. The first year was a very pleasant year for the people of Odisha. Okay, so in this year there were renovation and beautification of his capital. Okay, first year कौन कले ना that is रिनोवेशन कले. ओके, एंड ब्यूटिफिकेशन. जीवा नेक्स्ट ईयर को तांकर सेकेंड ईयर केमती कौन कटिथिला. खारावेल वाज वेरी एम्बिशियस रूलर हु वांटेड टू एक्सपांड हिज बाउंडरीज
ऑफ हिज किंगडम तापर कौन कले खारबेल ना निजर राज्यर साम्राज्य को वृद्धि करने चाहिए ओके टू एक्सपांड हिज बाउंडरीज ही न्यू दैट सातवाहनस वर पावरफुल डायनेस्टी इन डेकान से जानी जे डेकान ने किए पावरफुल थे ना सातवाहन माने रूलर्स पावरफुल थे ही डिस्पास्ड ए लार्ज आर्मी टू द डेकान से गोटे लार्ज आर्मी डेकान को पठेले किए ताको लीड करथिले हिज जनरल दैट इज महापद्म द कलिंग आर्मी मार्च्ड अप टू द रिवर कृष्णा एंड besieged the city of Asika. Okay, very very important. The strong hold of Satavahan. So Satavahan कर जो strong hold थिला था आपने ना Asika. Okay, ताको से माने occupy करथिले. The battle was fast, but the Kalinga army were defeated. In that battle, the Kalinga army were defeated. Okay, it is possible that Kharavala was captured and taken as prisoner. So सुनिए मैंने कहा जाउछि कि what according to evidence in that war Kharavala was taken into prison after being captured. The battle of Asika mentioned in the Hatigumpha inscription but outcome is not clear. ये जो बैटल ऑफ जहाँ भी हमें देखुचे सबू हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन को नहीं कि व्हिच हैज बीन डिकोडेड ओके जहाँ डिकोड कराई से अनुसार आम जानुचे सो कौन अच्छी ना जना जाइए जे ए बैटल रिजल्ट कौन थिला आउटकम कौन थिला तापर एटा क्लियर नहीं बट जहाँ जना पड़े से युद्ध में खारबेल कौन होता है प्रिजन कर दिया बंदी कर दिया जाइथिला ओके द आइडेंटिटी ऑफ सातकर्णी इज नॉट मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन बट इट इज लाइकली दैट ही वाज सातकर्णी वन द एविडेंस इज इनकनक्लूसिव माने आर कंक्लूजन किसी नथिला अकॉर्डिंग टू द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन बट इट इज मोर लाइकली दैट खारबेल वाज डिफीटेड किंतु जना पड़ुछि जहाँ से खारबेल कौन होते हारी जाइथिले व्हेन in the second regnal year okay the defeat of Asika was set back for Kharavala but it did not cross his ambition Kharavala से टाइम रे किंतु भांगी पड़ नथिले तांकर ambition पे लक्ष्य प्रति सतबेले सजाग रहिथिले he continued to expand his kingdom and conquered other territories including Magadha and Kosala तांकर जो ambition थिला vision थिला to expand his kingdom expand the territories of his kingdom ही कंटिन्यूड दैट तापर से कौन कले ना कनक्योर कले क्या मगध को आउ कोशला को कनक्योर कले ओके जीवा बर्तमान आम थर्ड रेगनाल ईयर को जीवा तृतीय वर्ष कौन होता दैट इज थर्ड रेगनाल ईयर इन द थर्ड रेगनाल ईयर कौन होता सो से फास्ट रेगनाल ईयर कौन होता ना इनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन गला सेकेंड मिलिटरी कैंपेनिंग होता against the Satavahana ruler that is Satakarni in which it is believed that Kharavala was defeated okay so ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା third year कौन होता so the third year कौन हला in the third regnal year Kharavala organized various performances of dance and music okay so Kharavala कौन करथिला ना गोटे वर्ष युद्ध करथिले पुणी रेस्ट नौथिले पुणी युद्ध पुणी रेस्ट ओके तांकर एभଳି चलथिला so third year टा कौन होतला ना डांस म्यूजिक भोकाल एंड इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक थिला फेस्टिव्स ओके फीस्ट भोजी करबार समय कटि होतला ही आल्सो अरेंज सेरेमोनियल एंड सोशल गैदरिंग व्हिच फीस्ट एंड मेरी मेकिंग वर द पार्ट द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट खारबेल वाज प्रोफिशिएंट इन आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस से म्यूजिक और डांस रे भी प्रोफिशिएंट थिले बोली ए हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन नु जाना पड़े दिस इज सपोर्टेड बाय द सीन फ्रॉम रानी गुम्फा व्हिच शोज a dance and song program okay so there are two possible explanations for this dita karan ei explanation ame pau first thing is Kharavala may have won the battle Kharavala युद्ध जीति चंदी with Satakarni जा करा जाउची माने प्रेडिक्ट करा जाउची जो जाइथिले कहा जाउची कि Kharavala हारी जाइथिले Satakarni को ठार सेकंड रेगनाल ईयर बट एटा ये जो देखो फीस्ट मेरी मेकिंग थर्ड ईयर रे एटा कौन पे हितबो एटा किछि बिलीव करा होछ कि खाराबेला सातकर्णी को ठारो वन को ठारो जीति जानती इन हिज सेकंड रेगनाल ईयर एंड अरेंज्ड सच परफॉर्मेंसेस टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री सेकंड पॉसिबल कॉज कौन होते पारे ही मे हैव डन इन ऑर्डर टू इंस्टिल जॉय इन हिज माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ कलिंग युद्ध हारी जावा फल लोक मैंने कौन होती दुखरे मर्माहत हो पड़ी सो तांको मन में खुशी देवाई से ये भोजीर आयोजन कि मेरी मेकिंग्स आयोजन करते
ओके अच्छा इन जनरल एंड हिज आर्मी तांको आर्मी और जनरल जो माने से युद्ध रे पार्टिसिपेट करथिले तांको आउ टिके एक्टिव करिया पई से एई भोजी मेरी मेकिंग रो आयोजन करि थई पारंती टू फॉरगेट द डिस कम्पिक्चर at the hands of that was the defeat. Satakarni also so that the army would regain mental strength again and further conquest. So ଏହା द्वारा कौन होबो ना आर्मी जो अछंती तांकर आर्मी और सोल्जर्स माने से माने दे विल गेट मेंटल स्ट्रेंथ टू फाइट अगेन ओके सो फॉर दैट रीजन ए जो मेरी मेकिंग्स आउ फीस्ट ओके ए सब आयोजन करा जाई थाई पारे जिबा नेक्स्ट बर्तमान फोर्थ ईयर को जीवा फोर्थ ईयर शुणु एक गोटे गोटे ईयर रो क्वेश्चन आपन को पढ़ी पारे इन व्हिच रेगनल ईयर खाराबेला अरेंज्ड मेरी मेकिंग इन व्हिच रेगनल ईयर द सातवाहन रूलर सातकर्णी डिफीटेड खाराबेला ओके केबे से सातवाहन रूलर को अटैक करथिले फोर्थ रेगनल ईयर कथा देखिबा इन द फोर्थ रेगनल ईयर Kharavala mobilized his army and marched towards the Deccan again. Okay. से कौन कले ना फोर्थ रेगनल ईयर से पुणी थरे डेकान को मार्च कले देखिबा कौन हला ही कॉन्क्यूर्ड द टेरिटरीज ऑफ राथिकास एंड भोजकस से टाइम रे कौन कले राथिकास और भोजकस जो टेरिटरी ताको कॉन्क्यूर कले व्हिच लाई रिस्पेक्टिवली टू द साउथ एंड नॉर्थ ऑफ नासिक रीजन. The Rathika and Vojakas chief were defeated and forced to pay obeisance to Kharavala. The chief of Rathika and Vojakas were defeated. The intention of Kharavala in crossing Rathika and Vojaka to weaken the Satavahana. ये कौन कले ना सातवाहन रो जो चारिपटे जो राज्य अछंती राथिका भोजक सो ए जो डेकान को मार्च करी से फर्स्ट राथिका भोजक तांको टेरिटरी को निज ऑक्युपाई कले. It is possible that Rathika Vojaka helped the Satavahan in the previous war against Kharavala. यह थिला संभव कि जो राथिकास एंड जो अछंती भोजकस से माने कौन करथिले ना सातवाहन को हेल्प करथिले इन द प्रीवियस बैटल दैट इज सेकंड रेगनल ईयर जो डेकान को मार्च करथिले से टाइम रे से तांको हेल्प करि थाई पारंती सो फॉर दैट रीजन ही फर्स्ट अटैक्ड राथिकास एंड भोजकस रिस्पेक्टिवली टू द साउथ एंड नॉर्थ ऑफ दैट इज नासिक रीजन. So by conquering their territory Kharavala was able to further weaken the Satavahana and increased his own power. से टेरिटरी को ऑक्युपाई कला पर सातवाहन कौन कले ना तांकर पावर को इंक्रीज कले. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द विडो क्वीन ऑफ न्यायनिका हु हैड अज्यूम्ड द पावर आफ्टर डिमाइस ऑफ सातकर्णी वन सरेंडर हरसेल्फ टू खाराबेला along with two sons. This would have further weakened the Satavahana and made easier Kharavala to conquer their territory. जीवा नेक्स्ट फिफ्थ रेगनल ईयर कौन है Kharavala's benevolent rule reflected in his fifth regnal year. Okay, benevolent means he was very much merciful. Okay, so लोक मान को बहुत भल पाउथले and he did many works for the welfare of the people. लोक मान को पाई बहुत काम करथिले. So in fifth regnal year he extended a canal. गोटे केनाल खोदन करथिले that had been built by Nanda king for purpose of irrigation. So जोटा को नंद राजा माने इरिगेशन पर्पस ले बिल्ड करथिले ताको से एक्सटेंड करथिले. This shows that he was concerned about the well-being of the people and wanted to improve their lives. या कौन दर्शाउची he was very much concerned about the welfare of the people. से लोक मानकर मंगल चिंता करथिले. ओके सो सेथि पई से सर्वदा कार्य करूथिले. There is some controversy over identity of Nanda Raja mentioned in the Hatigumpha inscription. So Hatigumpha जो नंद राजा का विषय अच्छी so टिके सेठी controversy create होची. Not clear picture is obtained. Some historians believe that he was Ashoka. किछि बिलीव करथिले से होचंते अशोका. Other believe that he was महापद्म नंद. किछि भाबुचन से होचंते अशोका आउ किछि बिलीव करचन से होचंते महापद्म नंद. This is because Mahapadma Nanda was whimsical and oppressive ruler, and it is unlikely that he would have undertaken such a benevolent project building a canal. से महापद्मा नंद एमती करिथियो बोली के बिलीव करनाते. अशोका would not have been referred to as Nanda. अशोका के तो नंद कहा जाउनी in his inscription as he was a Maurya belonged to Maurya dynasty. Okay,
सो दिस इज द मेन कंट्रोवर्सी जीवा बर्तमान 6th ईयर को कौन थिला 6th रेगनाल ईयर कौन थिला सो केनाल कंस्ट्रक्शन हेतिला आर मेन पॉइंट होची केनाल कंस्ट्रक्शन बेनिवोलेंट रूलर 5th ईयर जीवा नेक्स्ट 6th ईयर 6th ईयर कौन हेतिला इन द 6th रेगनाल ईयर खाराबेला रेमिटेड टैक्सेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो 6th ईयर कौन हेतिला टैक्स रेमिशन एटा मन रखु कीवर्ड benevolence both in urban and rural area of his kingdom. This shows that treasury of Kharavala was overflowing with wealth. से टाइम रे खारावालंकर ट्रेजरी फुल था माने देयर वाज मच कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ओके रेवेन्यू कलेक्शन बहुत थिला सति पई तांकर नो शॉर्टेज ऑफ वेल्थ एज ए बेनिवोलेंट रूलर ही टुक of the task of remitting taxes to his beloved subject to win their hearts. जीवा 7th year कौन हेतिला 7th regnal year it is specific year of Kharavala's reign he became father. Kharavala became father in the 7th regnal year okay सप्तम वर्ष राज्य शासन रे से फादरहुड गेन करथिले his chief queen referred to as queen of Bhajiraghara okay Bhajirghara gave birth to a son. This was the great source of joy for Kharavala who had no other children. He also ensured continuation of his royal lineage okay so से गोटे फादरहुड गेन करथिले इन द 7th regnal year बर्तमान जीवा 8th year अष्टम वर्ष कोन हेतिला इन द 8th regnal year Kharavala led an expansion to the north से नॉर्थ को अटैक करथिले एंड अटैक्ड राजगृह द कैपिटल ऑफ मगध मगधर कैपिटल राजगृह को अटैक करथिले इन द 8th regnal year okay he devastated गोरथगिरी वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोरथगिरी को डिवास्ट करथिले ए हिल फोर्ट ऑफ राजगृह हिज ट्रिउम्फ तांका विजय एट द राजगृह क्रिएटेड फियर एमंग द जवनज हु वर देन द ऑक्युपेशन ऑफ मथुरा ओके द जवनज हैड प्लान टू अटैक मगध बट दे फ्लेड अवे फ्रॉम मथुरा व्हेन दे हार्ड खाराबल एक्सप्लोइट्स जवनज प्लान करथिले अटैक करिया पई काहा को मगध को बट जते बेले खाराबल अटैक कले राजगृह को मगधर कैपिटल से दे प्लान टू एस्केप से माने खसी के पळेले द जवन रूलर हुज नेम इज रीड डाउटफुली एज ए दिमिटा और डिमाटा माइट बी डिमर्चस और मिनेंडर जना पड़छि कि से डिमर्चस कि मिनेंडर हेथिबे बोली कारण तांका नाम लिखा है हातिगुम्फा इंस्क्रिप्शन नेम दैट इज डिमिटा और डिमाटा खाराबल रीच्ड मथुरा एंड ड्रव द जवनस अवे फ्रॉम दैट प्लेस जतले मथुरा रे पहुंचले जवनस छाड़ी पळेले ही ब्रॉट ए ब्रांच ऑफ सैक्रेड कल्ब वृक्ष ओके कल्ब वृक्ष गोटे आनिथिले विथ लीव्स he distributed his wealth among the households brahmins श्रमणस आरतस etc that he brought from मथुरा से मथुरा रो कोन आनिथिले गोटे ब्रांच ऑफ सैक्रेड कल्ब वृक्ष गोटे आनिथिले तादरे पत्र थिला एवं जहाँ से सेपटु धन संपत्ति आनिथिले ताहाको से बांटी देथिले काहाक भितरे ना ब्राह्मण श्रमण हाउस होल्ड घर घर समस्त लोक मानक से बांटी देथिले ओके सो एथुरु जणा पड़छि खाराबल वाज वेरी बेनिवोलेंट रूलर जीवा 9th रेगनाल ईयर को सो 8th रेगनाल ईयर की पॉइंट कौन ना से अटैक करथिले राजगृह कैपिटल ऑफ मगध गोरथगिरी को डिवास्ट करथिले जहाँ फल जवन माने छाड़ी के पळैथिले आउ से कौन हेतिला ना आसला बेले से गोटे ट्री ब्रांच ऑफ सैक्रेड कल्ब वृक्ष आनिथिले मथुरा रु आउ से तांकर धन संपत्ति जो आनिथिले तांक से लोक मानक मध्यरे ब्राह्मण मानक मध्यरे बांटी देथिले जीवा 9th रेगनाल ईयर कौन घटिथिला इन द 9th रेगनाल ईयर खाराबला डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ gained from his exploits among the brahmins and aras of his empire से ब्राह्मण पुरोहित मानक मध्यरे बांटी देथिले तांकर सबु धन संपत्ति से जहा राज्य रु जय करिके आनुथिले दिस वाज द वे ऑफ शोइंग हिज ग्रैटिट्यूड एई भली भाबे से कृतज्ञता ज्ञापन करथिले फॉर देयर सपोर्ट ही आल्सो बिल्ड द ग्रेट विक्ट्री पैलेस महाविजय प्रासादम इन ऑर्डर टू commemorate his victory. The passage was built at the palace was built at that is 380 lakh coins. Okay, so आमे जते देखिबा 9th year रे कोन करथिले so 9th year रे खाराबला distributed wealth gained from exploits among the brahmins and aras and से गोटे great victory palace build करथिले that is महाविजय प्रासादम build करथिले and से
से पैलेस को बिल्ड करी थिले जिबा 10th ईयर को 10th ईयर कौन हेतिला इन द 10th रेगनाल ईयर Kharavala, who was embodiment of the principles of politics, diplomacy and peace, directed army towards the North India. से North India को march करथिले for conquest. However, the results of the campaign were obscure. किछि clear नथिला कोन हेतिला जिबा 10th year 11th year को in the 11th year regnal year Kharavala plowed Pithunda. Okay, से Pithunda conquer करथिले, a place established by his ancestors where a plow driven by asses. सेठी कौन होतला ना गध साहाଯ୍ୟରେ हଳ କାର୍ଯ୍ୟ सब होतला पिथुंडा. This was a symbolic art of humility and submission to the gods. It also showed that he was a wise and a prudent ruler who wasn't afraid to show weakness in order to achieve his goals. In some years, Kharavala fought severe war against the Tamil Confederacy. The Tamil Confederacy consisted of Chola, Pandya, okay, Keralaputras, okay, Satyaputras and Tamraparni. Okay, so Tamil Confederacy against madhyam fight करथिले. Kharavala defeated the Tamil Confederacy, हरैथिले and secured from his members jewels, pearls and precious stones as a symbol of allegiance. तांकोटे ये सब precious stones, pearls and jewels सब आनिथिले. जिबा 12th year 12 नंबर रेगनाल ईयर कोन हेतिला. In the 12th regnal year, Kharavala led campaign towards the north with a vast army. पुणी थर north को यात्रा करथिले गोटे vast army रा सहित. He proceeded up to northwest India and compelled the Indo-Greek rulers for submission. से Indo-Greek ruler मान को compel करथिले to submit them, so to accept the defeat. He encamped on the river bank of the Ganges and his elephants and horses drank water from the river. This sight struck fear in the minds of the Magadhan people. Brihasmita, okay, तो ताक कुहाजिबो Brihasmitra, the king of Anga and Magadha, surrendered the fleet of Kharavala without waging any war. से किछि war न करिकि कोन कले ना बृहस्मित्र जे कि थिले king of Anga and Magadha surrender कले खारवाला पाखरे. Kharavala brought back from Magadha the image of Kalinga Jino as a trophy of his victory. Okay, से कौन कले ना एटा very important. Kalinga Jino आनिथिले image Magadha भाटु as a trophy of victory. He also brought the vast treasure of wealth from Angas and Magadha. जिबा आजिर 13 regnal year विषय आज पढ़िबा. So in this 13 year of reign, Kharavala, by the request of the queen, that is Simhapatha, built 117 caves at Kumari Parvata. Kumari Parvata जो अच्छी उदयगिरी रे सेठी से 117टा केव कंस्ट्रक्शन करथिले कि खाराबेला कोन पाई ना फॉर जैन मंक्स साधु मानक पाई से 117टा केव खदन करथिले ऑफ गला who came from distinct places to take rest. So माने कि बहुत दूर दूर आसुथिले रेस्ट न पई. This was the noble service rendered to the Jaina and other monks. He revived the art and architecture of ancient Kalinga. So ancient Kalinga art और architecture को revive करथिले. That is मुख्य कला, which was going to be extinguished. In different caves of Udayagiri and Khadagiri, the image of Jaina Tirthankars, trees, creepers, images, royal servants were built by him that year. On the floor, meant for Brahmins, Sramanas, Arats, and pillars decorated with emerald were fixed. So Kharavala ame jati तांको estimate करिवा, Kharavala as a warrior and a ruler. So Kharavala was known as a formidable warrior. He conquered regions including Mathura and Tamil country. He served Magadha and crossed the Tamil Confederacy, expelled the Indo-Greek from the Mathura and ascertained the authority over Magadha. He was benevolent and cultural patronage. Kharavala always cared for the subject welfare. He was proficient in music, entertainment, subject with performance and feast.
He enlarged irrigation canal for agriculture. He remitted taxes and distributed wealth among Brahmanas. Okay. So जब देखिबा आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट कौन थिला? He rebuilt Kalinga Nagari after cyclone and devastation. He constructed gates, walls, buildings. Okay. And महाविजय प्रसादम गोटे निर्माण करथिले. Efficient administration seen through identify royal servants from cave inscriptions. So the trade and commerce कथा देखिबा. He prosperity during Kharavala due to trade and commerce. Shishupalgarh excavation reveals trade importance. Okay. So Pithunda city, likely a port city based on historical identification. Faith and tolerance का ऊपर थिला. Kharavala, as I have told you, was a devote of Jaina with evidence of faith in inscription. Brought back Kalinga Jinna, quote anthile, and built caves for Jinna monks. Okay. So he displayed tolerance towards other religions. He had a great tolerance towards other religions. Okay. So Mathuraru Kalinga Jinna anthile. Okay. So okay. Brought back Kalinga Jinna and built caves of Jinna monks. So Magadhara jo Kalinga Jinna image anthile and she built caves for the Jinna monks. Displayed tolerance kala. तापर जिबा next. Kharavala's legacy कौन थिला? Kharavala was belonged to the Chedi dynasty's clan. Okay. So the Chedi dynasty zenith under Kharavala's reign. Top रे पहुंचथिला खारवाल का टाइम रे. Freed Kalinga, served Magadha, defeated Deccan, revived the Jainism. Kharavala's rule brought prosperity, religious revival and freedom. Successor and end of Chedi rule in Odisha remain unclear. केबे हेछि सेटा that is unclear. Kharavala's legacy honored by the proud Kalinga to this day. So the people of Kalinga have already